Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. In this video, we will start reading from John Milton. In my previous video lectures, I have already covered Puritan as well as Restoration era introduction part. If you are new here, then please take a moment to subscribe my channel. And before watching this video, have a look on previous video also. I will be giving you link in I button. Watch that video first, then jump to this video. Now we will start from John Milton. So who is John Milton? He is best known as an English poet and intellectual writer during Puritan age, and he also served as civil servant under the Commonwealth era. So he is very renowned poet because he also wrote epic poem Paradise Lost in blank verse. So the starting line is taken from Lycidas. Weep no more, woeful shepherd, weep no more, Lycidas. Your sorrow is not dead. So first of all, we will know about a poem Lycidas. Lycidas is poem that is published during 1638, or in short it is pastoral poem, and it is dedicated to King Edward, his friend, Milton's friend at University of Cambridge, who drowned because of ship in the Irish Sea. So we will also see the detail of this passion. Has since his own lifestyle always been one of the major figure in English literature, but his reputation has changed consistently. He has been seen as a political opportunist and advocate of immortality. He wrote in favor of divorce and married 3 times. So it is very important. इन्होंने divorce tract लिखा था and also got married 3 times. An over serious classicalist and arrogant believer in his own greatness as a poet. So important because he wrote 3 divorce tract and also got married 3 times. An over serious classicalist and arrogant believer in his own greatness as a poet. He was all that characteristics of poet John Milton. So in next page we will see what John Milton is writing and what he is known for. So Milton is also known as the last great Renaissance poet because he wrote during that time and Puritan and transition period between Puritan and Renaissance. We found a values theme of tolerance, freedom and self-determination that is also expressed by William Shakespeare, Richard Hooker and John Donne. The basis of aesthetic study was classical, and the modernity in his intellectual interest can be seen in the fact that he went to Italy. So it is very important, ये आपको बहुत important है जानने के लिए, क्योंकि ये इटली गए थे और वहाँ पे ये मिले थे गैलीलियो से. और in his book he mentioned Paradise Lost, he mentioned about Galileo. ये UGC में already question पूछा जा चुका है कि in which book he mentioned about Galileo. So he met Galileo in Italy, who has been condemned as heretic by Catholic Church for saying the earth moved around the sun. Milton's early poem from 1620 to 1630s includes several which remain as the model of their kind. El Eligo and El Penisro, these both are companion poem. Eligo and El Penisro, these both are companion poem and pastoral poem. El Eligo means happy man and Penisro means melancholy man. I usually make this small charts for my revision as revision notes. So you can see I have already made this small sticky note chart. I have written certain things that is important for exam. You can take a screenshot for this, and you can also write this point in your notes. So moving forward, we will read Lycidas is one of the most quoted elegies in English. लिसिडस को बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है और इसको क्रिटिसाइज भी किया था सैमुअल जॉनसन ने. मूविंग फ्रॉम इट्स कमेंसेबल ऑफ हिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फ्रेंड who is King Edward, to reflection on writer's own morality and ambition.
finishing in his remarkable optimism of renewal. So we will read this. Weep no more, woeful shepherd, weep no more. So there is refrain, weep no more, weep no more. So if you get this line in your exam, so you can recall it is from Lycidas. For Lycidas, your sorrow is not dead. Thus sang uncouth swan to the oaks and rills, while still morn went out with scandals grey. So I have already underlined certain keywords so that I will remember in my exam. He touched the tender stops of various quills. So see the word rill, grey, quills, what writer he is using and what he want to say. With the eager thought rambling his Doritic lay, and now the sun had scratched out all the hills, and now was dropped into the western bay. At the last he rose and stretched his mantle blue. Tomorrow to fresh woods and pasture new. So it is very important for your exam point of view. Like all Milton's, Lycidas has been interpreted as especially Christian. क्रिश्चियन वर्ड का मतलब है यहाँ पे रिलीजियस रेफरेंस. सच रीडिंग कैन बी सपोर्टेड बाय पोइट्स एम्बिशन टू जॉइन द चर्च बाय मैनी एक्सप्लिसिटली क्रिश्चियन रेफरेंस. तो यहाँ पे हमें बाइबल के रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे इन पोइट्री लिसिडस. और टाइटल ऑफ पोएम लिसिडस इज टेकन फ्रॉम हीरोडोटस एंड ऑल्सो फ्रॉम वर्जिल एंड ओविड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें रेफरेंस भी बाइबल के है, रिलीजियस रेफरेंस है. बट हिज बिलीफ गो बियॉन्ड एनी सिंगल डॉक्ट्राइन and so wide can be wide from the range of political and social pamphlets. So John Milton is also famously known for his political and social pamphlet and also for divorce tract. He wrote between these kind of writing in 1640 and 1660. A time when he wrote only a few poems like John Milton's prose can be related to. अब देखो ये important है क्योंकि ऑप्शन में कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि जॉन मिल्टन की जो राइटिंग है वो किससे कंपेयर की जाती है और वहाँ पे आपको चॉइस मिलता है विद द राइटिंग ऑफ दीज राइटर. अगर आपके ABC में अगर ब्राउन आ गए, थॉमस ब्राउन है, दैन एंड अनदर राइटर इज़ रॉबर्ट बर्टन. इनकी राइटिंग से उनकी जो राइटिंग है मैच करती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन इट और उसको नोट करिए, अपने नोट्स में लिखिए. सो जो मिल्टन की राइटिंग्स है वो किससे रिलेटेड है? थॉमस ब्राउन की एंड रॉबर्ट बर्टन से. विद मेजर डिफरेंस क्या है उनकी राइटिंग में? मिल्टन एंगेज इन पॉलेमिक मीन्स critical writing, more critical, more satirical writing, as well as touching upon philosophical concern. The monarchy and only few years Parliament decided to recall executed King's son to the throne. It was a time when a great many of issues which has arisen since Reformation came to head. अब देखो बहुत सारे इशू थे, इशू लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स, पावर एंड फ्रीडम. वी हैव ऑल्सो सीन इन 11th कि कैसे स्ट्रगल हो रहा था पावर और फ्रीडम के बीच में और मैन अपनी नीड्स को बढ़ाने के लिए वॉर कर रहा है. सो इट इज़ मेन थीम इन 11th. तो यही थीम आगे तक चलेगी. इट वॉज नो एक्सीडेंट दैट मिल्टन्स फर्स्ट पॉलेमिटिक पैम्पलेट was entitled of Reformation in England and the cause that hitherto have hindered it, 1641. If I mistake any name, so please forgive me. So he addressed such varied subject as divorce in 4 pamphlets. So 4 pamphlets कौन से थे? It is very important to remember the 4 pamphlets. 4 pamphlets जो थे वो थे यहाँ पे मैंने अपने छोटे से इसमें बनाकर लिख लिया यहाँ पर. आई यूज टू मेक दीज नोट्स. पैम्पलेट था द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स. सेकेंड है जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर. थर्ड इज टेट्रा जॉर्डन एंड 4 इज कोलेस्ट्रियन. So he also wrote pamphlet on education and famous on freedom, that is Areopagita. So he is writing upon hot topic of that time, that is education, freedom of press and speech in Areopagita 1644.
In this extract, he anticipates his great epic Paradise Lost by more than 20 years. So ये extract, I will not reading this extract. Please go through this extract, is very important. किसी भी extract को छोड़िए मत, सबको पढ़िए क्योंकि राइटर यहाँ से आपको बैकग्राउंड का पता चलेगा. Milton argue in 1649 after execution of Charles I that a people free by nature. So इनका एक वर्क है. If you can comment me down which work he supported the execution of Charles I. कौन से वर्क में इन्होंने बोला है कि चार्ल्स वर्क का जो एग्जीक्यूशन है वो ऑल्सो से दैट अ पीपल फ्री बाय नेचर, कि ये डिसीजन है पीपल का, एंड हैड अ राइट टू ओवरथ्रो अ टायरेंट, a subject that recall vividly the questions examined by Shakespeare in his major tragedies about 50 years. Milton continued to defend his ideal of freedom and republicanism, but at the restoration, by which time he was blind and he was arrested. So जब भी restore हुआ by Charles II के द्वारा in 1660, तब ये blind थे और इनको अरेस्ट किया गया था. Various powerful contracts allowed him to be released after paying a fine, and his remaining years were devoted to composition orally in form of dictation to his third wife. तो इन्होंने अपने बाकी जो वर्क थे, because of his blindness, he dictate to his wife, and his wife used to wrote that of his epic poem on the fall of humanity, that is पैराडाइज लॉस्ट, पब्लिश्ड इन 1667. अब देखो हम बार बार कवर करेंगे. आप बोलते हो कि हाँ मैम, हाउ टू कवर क्रोनोलॉजिकल वर्क को कैसे कवर करें. जब आप किसी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद हो जाएंगे. हमने 3 बार 1667 कवर कर लिया, तो आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी कवर हो चुका है. तो आप जब भी देखोगे तो आपको याद होगा. सो इफ़ यू डू सीक्वेंसली, I always say you that please cover your book sequentially. कभी ऊपर नीचे कवर मत करिए क्योंकि आप उसके क्रोनोलॉजिकल वे बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट like Spencer and Morley before him, and like Tennyson 2 centuries later, Milton was attracted to Arthurian legend. So remember that he was also attracted to Arthurian legend as the subject for his epic poem. But the theme of the fall goes far beyond national epic and gave the poet scope to analyze the whole question of freedom, free will, and that he should write. He wrote upon assert an eternal providence and justify the ways of God to man. His confirmation has been seen as Milton's arrogance, but it also signaled the great attempt to rationalize the Adam and Eve. For many critics, including poet William Blake and P.B. Shelley, Satan figure as a figure of devil is hero of poem. So it is, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो विलियम ब्लेक है उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि जो मिल्टन है, जॉन मिल्टन, ही इज़ फ्रॉम डेविल साइड. इन्होंने बोला है कि वो डेविल के साइड पे है. एंड शैले इज़ ऑल्सो सैटराइजिंग एंड सैटनिक स्कूल. तो सैटन assert his own freedom in his reasoning between heaven, from he is expelled Adam and Eve are from the Garden of Eden, and hell he will be freed and sign of supreme. So ये extract दिया हुआ है, you can read, please read these extracts. When Eve yelled to Satan, जब eve ने yell किया था Satan की temptations, and bite the forbidden fruit, the effect is of loss. But loss will later turn to gain of future for humanity on earth. ये वाला important है, you must read. Rash hand in evil hours, forth reaching to the fruit, she plucked and she ate. Earth felt the wound and the nature from her seed. Sighing through all her works, gave sign of woe. That's all was lost. Like the ending of Lycidas, final image of paradise is profoundly forward-looking, image of gain through loss. As Adam and Eve go hand in hand towards future, loss of paradise is seen as humanity's gain. तो बाकी जो बुक है एंडिंग में राइटर ने थोड़ा ट्विस्ट दिया है कि ये जो लॉस है वो फ्यूचर में गेन एज अ गेन है. इन बुक 12 ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है? बुक 12 से लिया गया है. The world was all before them,
where to choose, their place of rest and providence their guide. They hand in hand with wandering step and slow through their solitary way. So ये एंडिंग लाइन है, प्लीज़ रिमेंबर इट, और कई बार एंडिंग लाइन्स भी पूछी जा सकती है. सो नेक्स्ट पार्ट इज जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफेबल टू मैन. तो ये सब जो लाइन्स है वो देखो, अब ये इसमें हमें इट इज़ मेकिंग कनेक्शन विद पैराडाइज लॉस्ट, और ये कहाँ से लिया गया है, सैमसन अगोनिस्ट से. सो जो मिल्टन की सैमसन अगोनिस्ट है वो वर्स ड्रामा है, एंड पैराडाइज रीगेन अ सीक्वल इन 4 बुक, जो 4 बुक्स, एंड पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन 10 बुक्स. सो ये याद रखना है. एंड सैमसन अगोनिस्ट वर्स ड्रामा. सो वी सी सिमिलरिटी बिटवीन पैराडाइज लॉस्ट एंड दिस वर्क सैमसन अगोनिस्ट. बोथ सैमसन एंड क्रिस्ट आर सुपर ह्यूमन, indeed beyond the bound of normal human being. As such, their trump and conquest are less clearly exploration of human quality. But Samson destroyed the Philistines and their temple, और Jesus Christ repelled temptation of Satan. So इस वजह से इन दोनों की इस वर्क की सिमिलरिटी हमें यहाँ पे मिलती है. They lack the element of humanity, like we have seen in medieval एंड मोरालिटी प्ले. इन दोनों में जैसे हमने ह्यूमैनिटी के बारे में देखा है, इन दोनों वर्क्स में भी मोरालिटी का एक एग्जाम्पल शोन होता है. दिस डज नॉट इंडिकेट डिलैबरेट रिटर्न टू अर्लियर थिंकिंग ऑफ मिल्टन्स पार्ट, पर ये इनडायरेक्टली हमें हीरोइक ट्रेजिडी के बारे में लिखा हुआ है, और वो भी एक ट्रेजिडी ही है, पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन्स रिटर्न टू द थीम ऑफ ब्लाइंडनेस इन सम ऑफ डार्क. ठीक है, अब इसमें जो सैमसन होगा वो ब्लाइंड हो जाता है. सो ही ऑल्सो राइटिंग ऑन ब्लाइंडनेस, अपनी ही थीम को बार बार लेकर आ रहा है. सो आइलेस इन गाजा एट द मील विद द स्लेव, ये जो टाइटल है वो लिया गया है बाय अल्डॉक्स हक्सले इन हिज वर्क. ये जो टाइटल है वो नॉवल का टाइटल लिया गया है बाय अल्डॉक्स हक्सले. सो ये जब पढ़ोगे आप एक्सट्रैक्ट, उसको गूगल सर्च करोगे तो यू विल नो मोर थिंग्स. और सैमसन अगोनिस्ट इस टाइटल टेकन फ्रॉम ग्रीक ट्रेजेडी से लिया गया है, दैट इज सैमसन ग्रीक हीरो. बाइबलिकल स्टोरी भी रिलेटेड है सैमसन अगोनिस्ट से, और इट इज़ अ ट्रेजिक क्लोजलेट ड्रामा. Poem is journey from darkness as Samson moved from his prison to final act strength pulling down temple of his foe. Some critics have been seen echoing Milton's own situation. इससे critic ने देखा है कि ये खुद की ही situation को echo कर रहा है as a political idol. जो final note है इस work का, उसमें कैथेरिसिस हमें found मिला है. कैथेरिसिस means purification of emotion. फाइनल नोट में क्या लिखा हुआ है, ऑफ ट्रुथ एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज ग्रेट इवेंट and calm of mind all passion is spent. It is remarkable that John Bunyan Pilgrim Progress published in 2 parts. Firstly 1678 में 1679 and secondly 1684.